Good morning, students. Today we are going to start a very new topic of chapter 1.1 Business and Introduction. And the name of that topic is Objectives of a Business. Before starting it, we have to understand about the meaning of objectives. What do you mean by objective? Then we will continue with the objectives of a business. So very first is objectives. What do you mean by objective? Objectives are, we can say that those endpoints for the attainment of which all the activities of a human being is performed. So means that end point for the attainment of which all the activities are done by a human being. Suppose as a student you have one objective, that is to score highest marks in 11th class final term exam. So for the attainment of it, for the achievement of it, you have to perform n number of activities. You have to attend your classes regularly. You have to obey your teachers regularly. You are making your own notes. You are means taking guidance of your relatives or friends or tuition teacher, etc. So you are doing your all activities to perform well in final term exam, means to obtain your objective. You want to fulfill your endpoints. Clear? So in the same manner, every business has their own objectives. These objectives are related with the earning money, innovation, customer creation, and many more. So we can say that objectives of a business means that endpoints for the attainment of it, every business organization performed all their activities. So objectives of a business, those endpoints for the attainment of which all the activities of a business unit is performed. For deep study, we can divide it into three categories. First one is economic objectives of a business unit. Second one is social objectives. Third is, you can say, other objectives of a business unit. So first one is economic objectives. What do you mean by economic objectives of a business unit? Economic objectives, in simple language, we can say that those objectives of a business unit which are directly related with the earning money. Clear? Every business organization is set up to earn some kind of money, some kind of reward, some kind of, you can say, reward of their investment. Clear? So without profit, or you can say without economic objective, a business unit can't be imagined. So all types of objectives which are related with the earning money is known as economic objectives of a business unit. We can further divide it into five categories. First one is earning profit. Earning profit means every organization's main objective is to earn profit. Without profit, a business unit, because business is an economic activity, so without profit making, no business can be imagined. Just आप किसी को अगर अमाउंट एज अ लेंडर प्रोवाइड करते हो, तो आपका इंटरेस्ट किस में होता है? उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करने का. इन द सेम फॉर्म, इफ़ यू हैव अ building, then you as a landlord provide that building to your tenant, then the main objective of your is to get rent. So in the same form, every businessman invest their money in their own business, so he or she wants to get some reward in the form of profit. So without profit, our business can't be imagined. Two main concepts are there regarding profit. First one is maximum profit and second one is sufficient profit. So if you are means go with maximum amount of profit, then as a businessman you have to do some kind of unfair trade practices, like you have to charge some extra money. As a businessman, you have to create some kind of artificial scarcity in market, so that demand of your product can be arise. You can do adulteration, you know. So this concept is not a long lasting type of concept. Clear? So अगर एक पर्सन आपके बिजनेस से अगर एक्सेस अमाउंट पे कुछ परचेज कर भी लेता है, जब उसे रियलाइज़ होगा तो
नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा कभी भी सेम शॉप पे उस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए. सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग टाइप ऑफ concept. Every businessman wants to survive in that market for long time period, so he must will go with the sufficient amount of profit. Sufficient amount of profit means that amount of profit which is reasonable type of profit. You can say it will cover, as a businessman it will cover your cost, as well as it will provide you the reward of your investment. Clear? So if you choose sufficient amount of profit, then you can survive long. You can grow up your business, you can obtain some kind of prestige or recognition of your business. Next concept is innovation. Firstly, what do you mean by innovation? Innovation, in some simple language, we can say that to do something new, कुछ ना कुछ नया करना, ठीक है, वो इनोवेशन है. सो टुडे इज द मीन्स business is facing a n number of competitions. So if you want to survive in a market for long time period, then you have to provide some new kind of product to your customer, or you can say an attractive type of packaging of your product. So in innovation, we can say that we can divide it into two ways. First one is to provide new types of products, and secondly, we can say that you can adopt easy production and distribution method. Means या तो आपको अपने प्रोडक्ट को नया लुक देना होगा, या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिए जो है वो नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिसर्च के थ्रू जो हैं वो इन्वेंट करने पड़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लक्स साबुन का एक ऐड लेते हैं, एक लक्स साबुन जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और अगर वो अपने प्रोडक्ट, देखो सौंप तो सौंप ही रहती है ना, लेकिन फिर भी वो कितने ईयर्स से मार्केट में जो है सरवाइव कर रहे हैं. तो उनका मेन मोटिव क्या है? एक इनोवेशन जो है उसमें मेन रोल प्ले कर रही है. वो कभी अपने पैकेजिंग का स्टाइल चेंज कर देते हैं, कभी उसमें गोल्ड कॉइन कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करके उसको अट्रैक्टिव कर देते हैं सेल इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? तो कभी उसकी फ्रेगरेंस चेंज कर देते हैं. मींस अगर आपका प्रोडक्ट, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, बट अगर आप उसमें चेंजेस नहीं करते तो एक टाइम पीरियड पे आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट से फेडअप हो जाएंगे. Clear? So innovation, you can say continuously marketing research. Innovation means to know the demand of and interest of your customer, attract your customer by some new kind of activities. It all these concepts are very much essential for your business survival. Next concept is customer creation, or you can say creation of customer. So customer means, you can say in business language, customer is a goat for businessman. If a businessman is able to attract more and more potential customer, then it will increase the sale of their products. It will increase the reputation of that particular business. It will all, if sale is increased or reputation is increased, then definitely profit amount is also increased. So if profit increase, then long time period survival is also possible for that type of businessman. So a businessman do all efforts regarding to attract new customers, and you can say regarding to means linked with their old customer. क्लियर? उसको ओल्ड कस्टमर्स को भी साथ में रखना है, उसको भी सेटिस्फाई रखना है, और सेकंड उसका रहेगा कि वो न्यू कस्टमर्स को भी जो है वो अराइज करे, न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करे अपने प्रोडक्ट से, अपने डीलिंग से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपने वे ऑफ ट्रांजेक्शन से. क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? In simple language, we can say that productivity of a business means ratio between inputs and outputs. Clear? So if you have higher products, then it will increase your efficiency, as well as you can provide your products at the time of demand arise. Clear? So अगर productivity ज़्यादा है, products ज़्यादा available हैं,
सो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में प्रोवाइड करवा पाओगे। सो प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यू रखना एक लिमिट तक वो बिजनेसमैन का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड financial resources. Listen carefully. Two types of resources are available for a businessman. First one is physical resource, you can say, and second one is human resource. In physical resource we can include money, material and money, material and machinery. And in human resource we have to include manpower, employees, labor. Clear? So regarding physical resource means every business organization wants that he has a number of machineries, a number of money available at the time of requirement, and number of you can say material required for the production of the goods. क्लियर? एक शॉपकीपर ये चाहता है कि उसके पास हमेशा स्टॉक रहे ताकि वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड है तो उसके पास मशीनरीज अवेलेबल रहें ताकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो पॉजिटिव रहे, हमेशा प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। अगर उसके पास मनी अवेलेबल है देन ही और शी कैन ऑब्टेन एवरी टाइप ऑफ यू कैन से बेनिफिट ऑफ दैट मार्केट। क्लियर? कोई भी बेनिफिट जब अराइज होता है, कोई भी अल्टरनेट जब अराइज होता है तो उसके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहे जिससे कि वो उसका जो है उस अल्टरनेट को ऑब्टेन कर सके, उसका बेनिफिट ले सके। सो फाइनेंशियल रिसोर्स मीन्स दैट टाइप ऑफ रिसोर्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी. So, if a business wants to get their economic objectives, so it's very much compulsory to have physical as well as financial resources at every time. Clear? Next, second category of objectives of business is social objectives. Social objectives, we can say that type of objectives which are directly related with the society's welfare. For the welfare of society, and you can say that society members. So in this category we can include four main points. Very first is to provide quality goods and services at reasonable price, or you can say fair price or cheap price. It's a responsibility for a good businessman to offer quality products to their customer. If you are providing, as a businessman, you are providing quality products or services to your customer, then customer will be satisfied. If once customers are satisfied, customers needs and wants are satisfied, then they will come again and again to purchase same kind of services and products from you as a businessman. So it will increase your sale as well as profit. So the social objective, as a social member, as a social human being, a businessman has some kind of social objectives, and the very first is to provide quality products to your customer. Next one is generating employment opportunities, because business is set up in a business society. Business is set up in society, you can say. Business is set up for society. Business जो products बना रहा है वो भी society members के लिए हैं, and these types of products are also manufactured or produced by society members. जो उस business में काम कर रहे हैं वो भी society members ही हैं. So it's a responsibility of every business to generate maximum employment opportunities for the, you can say, for the raisement of the standard of living of people. Clear? Business, as a businessman, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि सोसाइटी मेंबर्स को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएं. आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस अगर जो है सपोज डिसेबल पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है तो एक अच्छी रेपुटेशन अराइज होती है उसकी, मार्केट में गुडविल अराइज होती है, और मैक्सिमम ये जो रेपुटेशन है, ये जो प्रेस्टीज है, वो मैक्सिमम सेल में कंट्रीब्यूट करती ही है. एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ. रूह अफ़ज़ा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोल्ड ड्रिंक्स
मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, बट वहाँ पे एन नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं. मैं किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट इट विल यू कैन से क्रिएट अ नेगेटिव अप्रोच टू हिंदू कम्युनिटी, है ना. हिंदू कम्युनिटी को वो चीज़ नेगेटिव अप्रोच में लेकर आएगी और हो सकता है कि वो उसके प्रोडक्ट्स की सेल ना करे, मीन्स उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करे. So, as a businessman, it's a social responsibility of you to provide healthy opportunities for employment. Next one is community service activities. Community service activities, or you can say uh, community service activities, you can say that type of activities विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. जैसे एशियन पेंट है, एशियन पेंट्स वाले क्या करते हैं कि जहाँ कहीं पे भी उनकी ब्रांचेस होती है ना, वहाँ के नियर अबाउट एरिया के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं. कहीं उन्होंने फार्मर्स के लिए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी है, ठीक है, उनके लिए हॉस्पिटल्स सेटअप कर दी है, लाइब्रेरी सेटअप कर दी, उनकी जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल फैसिलिटीज़ अराइज कर दी हैं, सेटअप कर दी हैं. So these types of community services, service activities are very much essential for the you can say prestige or a good reputation regarding a business unit. So if a business unit wants to survive long time period in the society, then it is necessary to do these type of activities. Next one is avoidance of unfair trade practices. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स ऐसे ट्रेड एक्टिविटीज़ विच आर मीन्स यू कैन से टोटली अनफेयर, जो गलत हैं बिल्कुल ही, उसको अवॉइड करना चाहिए. सो कैसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ये, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट अर्निंग प्रॉफिट में डिस्कस किया था, सेम मीन्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी इन द मार्केट. ठीक है, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है लेकिन आपने स्टॉक में वो चीज़ रख ली है, अपने गोडाउन्स में रख दी है और आपके पास मैक्सिमम स्टॉक है उस टाइप के प्रोडक्ट्स का, लेकिन आप मार्केट में जो है शो नहीं कर रहे हो, ताकि उस चीज़ की डिमांड जब पीक पर पहुंचे तब आप उसको हाई रेट्स पे अवेलेबल करवाओ. सो इस टाइप के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें हम अडल्ट्रेशन भी ऐड कर सकते हैं, to you can say to charge excess amount from your customer. So these types of activities are totally avoided by uh, you can say a safe businessman. If you want to be a good businessman, then you have to avoid these types of activities. We can add in social objectives one more point, that is protection of environment. Protection of environment means it's a social responsibility of a business unit that to provide a healthy environment or a friendly environment to their customer or to the society members. So it's compulsory for a businessman to use some kind of, you can say, friendly techniques रिगार्डिंग टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. क्लियर, क्या हो सकती हैं वो? सो ऐसे चिमनीज़ यूज़ करना जो स्मोक फ्री हैं. क्लियर, जो वेस्ट मटेरियल हैं, अपने जो बिज़नेस से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल अराइज होते हैं, उनको एक सेफ़ जगह पे जो है उसको डैमेज करना, उसको स्पॉइल करना. सो दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विद द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट. So very next point is, that is other objectives of a business unit. First one is manager performance and development. So as we discussed earlier, that two types of resources are there. First one is physical resource and second one is human resource. So in human resource we have to include all types of employees and laborers of a business unit. So it's a responsibility or objective of a businessman to provide a free environment regarding to the development of their men force. Clear. So a very means businessmen must provide some kind of motivational programs for their managers, employers and fourth grade employees. Okay, second point is workers performance and attitude. Listen students, two main pillars are there regarding a business unit. First one is management and second one is, you can say, employees or workers or laborer.
So if uh, a healthy relation between management and workers, means employer and employee, is there, only then a business can survive, a business can be able to get maximum profit. क्लियर? अगर आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ हैं एज अ बिजनेसमैन, तो तभी आप मैक्सिमम जो है टारगेट्स अचीव कर पाओगे. सो फॉर दिस पर्पस इट्स वेरी मच कंपल्सरी टू मोटिवेट योर वर्कर्स, to means to provide a lump sum amount as a bonus time to time, or you have to coordinate, you have to understand the feelings of their workers. You So this is all about the objectives of a business. So you have to listen carefully, you have to prepare your own notes, and you have to do the same topic. Next topic is role of profit in business. What is the role of profit amount in a business unit? So we can say that without amount of profit, no business can be imagined, no existence is there regarding a particular business. So we have to do this concept in deep form. So we can divide it into 5 points. 5 main points are there. Very first is for long survival. Long survival means you have to means you want, if a business is established by you, then you want that your business live a long life, a long successful life. अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें एक लमसम अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपकी ये कोशिश रहती है कि मेरा ये बिज़नेस लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे टाइम पीरियड तक चले. कोई भी ये सोच के बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता कि मुझे 4 दिन चलाना है, या मुझे 1 वीक चलाना है, या मुझे 6 मंथ्स चलाना है. सो फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस यूनिट, it's very much essential to earn profit. If profit is there, only then that type of business can survive a long life in that particular market. Otherwise it will close down very quickly. So means if you want to get profit, means a sufficient amount of profit, only then you can survive your business for a long life. Next one is for rapid growth. Rapid growth means you can say the development of a business unit. So how can you develop your business? This question means the answer of this question is, you can say, with the amount of capital, sufficient amount of capital. But now the question is, from where you can get that amount of capital, or that amount of investment. So in simple language we can say that by the amount of profit which is earned by the business unit time to time. अगर आपके बिजनेस को टाइम टू टाइम प्रॉफिट अर्न होगा, ओनली देन इट्स पॉसिबल दैट द बिजनेस यूनिट विल survive, or the business unit will get developed. Okay, विदाउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक बिजनेस यूनिट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, डिवेल्प नहीं हो सकता. सो अगर बिजनेस में प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाएगा, तभी बिजनेस जो है वो डिवेल्प्ड हो पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. इंक्रीजिंग एफिशिएंसी मीन्स यू कैन से self interest is a very much essential point regarding a business unit. Self interest means अगर आपका खुद का इंटरेस्ट अराइज होगा तभी आप काम करोगे. अगर आपके एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और सपोज़ आपने एक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपको बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए, तो ये आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा. इसका बेनिफिट क्या होगा? इससे आपको अपनी कैपेसिटी रियलाइज़ होगी दैट यू कैन डू बेटर, यू कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. सो वो आपके जो सेल्फ इंटरेस्ट है, आपके उस सब्जेक्ट के मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा. इन द सेम मैनर you can say in business units, two main parties are there. Very first is owner, and second one is, you can say, laborer, or employees, or workers. So every owner of a business wants to get maximum profit, and for this they try to do more and better work.
But on the other hand, you can say worker, or you can say employees or laborer, they wants to get maximum bonus, means maximum amount of salary, maximum amount of rewards, maximum amount of bonus. But if they both try to increase the profit amount, then both the parties are benefit, means it's beneficial for both the parties, and both the parties are motivated regarding to do something new, something special, so that they can earn a maximum amount of profit, so it will automatically increase their efficiency. Very next point is for building prestige and recognition. In simple language, you can say that it will if a business increase their goodwill, then it's essential to earn maximum amount of profit. अगर किसी business के पास maximum amount of profit होगा, only in that condition it will increase their prestige or goodwill. Clear? Because every business or every businessman wants to satisfy all parties which are directly or indirectly related with that business unit. So employees are directly linked with that business unit, investors are also there, bank authorities may be there. Clear? So employees wants a lump sum amount and adequate amount of remuneration, salary or bonus, or you can say commission type of rewards. In the same form, investor wants a lump sum amount of interest after a specific time period, means repayment of their principal amount. In the same form, bank wants. Clear? So अगर आपके पास sufficient amount of profit है, only then you can fulfill the requirement of all the parties which are directly or indirectly related with your business unit. So if you are able to satisfy all the parties interest, only then you can establish your business as a well reputed business, means the reputation, the prestige of your business is increased, or you can say is remain constant with the help of these parties. अगर इन पार्टीज़ को आप सेटिस्फाइड रखते हो, ठीक है, तो ये सोसाइटी में आपके बिजनेस और आपके बिजनेस मैनशिप के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो स्प्रेड करेंगी, और उससे आपके बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी, सेल इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मैक्सिमम अट्रैक्ट होंगे. लेकिन आप इन पार्टीज़ को कैसे सेटिस्फाइड रख सकते हो? विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अगर आप इनको प्रॉपर रिवॉर्ड देते हो, मीन्स अगर आपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी दी, अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? ओनली इफ़ यू एज अ बिजनेसमैन, इफ़ यू गेन्ड लमसम अमाउंट एज अ प्रॉफिट. अगर आपके पास प्रॉफिट होगा लमसम अमाउंट, तभी आप इन सारी पार्टीज़ को सेटिस्फाइड रख पाओगे. अगर ये सारी पार्टीज सेटिस्फाइड हैं, देन इट विल इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस. नेक्स्ट वन इज़ for earning more profit. If you have a lump sum amount as a profit, as a businessman, if you have a lump sum amount of profit, then only you can earn more profit. Because in some conditions, some opportunities are there. Suppose if you are purchasing a raw material or any type of finished goods, and you are paying in cash, then you can get cash discount. Clear? So some kind of opportunities are available every time, some kinds of opportunities are available in market. But if you have if you are able to if you have a lump sum amount of profit, only then you can able to get that type of benefit, that type of opportunities. So how is it possible to uh, get the benefit of these types of activities? Only with the amount of profit. अगर आपको मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसका बेनिफिट लेना है, तो आपको जो है आपके पास एक लमसम अमाउंट प्रॉफिट का होना चाहिए. आपके पास कुछ कैश हर टाइम पे होना चाहिए, और वो कैश आपका प्रॉफिट से ही आएगा. सपोज़ मार्केट में जो है कैश डिस्काउंट अवेलेबल है, आप कुछ भी परचेजिंग करते हो, आप फिनिश गुड्स में डील कर रहे हो, ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस है आपका, या आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस है, आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो. क्लियर? सो इफ़ यू वांट टू गेट दैट टाइप ऑफ बेनिफिट, अगर आपने वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट लेना है, देन यू हैव टू पे अ लमसम अमाउंट ऑन स्पॉट.
आपको कैश में पेमेंट करना होगा. सो दिस इज possible only with the amount of profit. So we can say that in last line we can say that profit will increase the amount of investment or your capital. So this will helpful again to earn more profit. So this process will continue, and if this process begin, then it will continue. So that's all for this point. You can say the profit is very much essential element of a business unit. So this chapter is completed by me, and if you have any type of query, any type of question, then you can call or message me.